ठीक है. So today I'll tell you very important part of the Java programming, which is called as the abstract class and interface. First we will check the abstract class, and this is very important topic for any exam, for any interview, and for any projects. So let's understand what is abstract class. Before abstract class, I'll tell you one simple example. Suppose if I have a class shape, but we just keep the shape right now. Create a class circle. Create a class circle. Create a class triangle. Create a class rectangle. Create a class rectangle. Okay. Rectangle. Okay. Create a class circle, rectangle. Okay. Now my question is, select circle, triangle and rectangle. So every class has a common behavior like a area. Okay, I'll take a one double private double R for radius. Take the constructor here, generate a constructor, initialize the value, and to calculate area I will take a method public void circle area. Okay, and double circle area equal to, so there is a constant variable in Java which is called as final. Final means constant 3.14. Final means you cannot change the value of this variable once you initialize this value. This is a constant value. This is a constant value. Once you assign, you cannot change. Once you assign, you cannot change this value. Okay. Okay. Fine. 1 second. So, as I said, here we have, this is my constructor, this is a constructor, and circle area equal to pi into r into r. That's why, so area of a circle is plus PA. Area of circle is CA. So area of circle is CA. Similarly, I will take a one more class triangle area and private double base, private double height. Constructor is required here. This is constructor. Then I need a method here, public void triangle area and double PA equal to 0.5 into B into H. Okay, this is what PA is equal to 0.5 into B into H. That's why, so area of a triangle is plus PA. Area of triangle is plus PA. Okay, this is circle area. So area of circle is, this code is here. Area of triangle is, code is here. Same for the rectangle area. Code for a rectangle area. Now tell me, tomorrow I want square area, I want polygon area, I want, okay, like see, there are n number of shapes are there, है ना? Yes or no? There are n number of shapes are there. Circle, triangle, rectangle, square, polygon, hexagon, है ना? So every time I will take a new class and I have to add a method. In each and every class I have to add a method.
So can you predict the method name right now? Can you predict the method name? Suppose polygon के लिए method क्या आएगा बताओ? Tell me. ठीक है. So method are changed as per the need. बरोबर है. That's right, Pooja. Clear. Okay, methods has to change as per the need here. तो क्या हुआ देखो, अगर मैंने तुम्हें ऐसे पूछा कि सर्कल का मेथड क्या आएगा बताओ. टेल मी, सर्कल का मेथड क्या आएगा? सर्कल एरिया. ट्रायंगल का मेथड क्या आएगा? ट्रायंगल एरिया. स्क्वायर का मेथड क्या आएगा बताओ. टेल मी, व्हाट इज द मेथड फॉर अ स्क्वायर? Yes, tell me the method name to calculate area of square. Okay, square area. ठीक है. Tell me the method for polygon. Tell me the method for polygon. Okay, tell me the method for the hexagon. Tell me the method for hexagon. Okay. तो अभी देखो, हाँ अभी listen carefully. हाँ, everybody listen carefully. This is very interesting and important. तुम लोगों ने हर क्लास के लिए मुझे अलग अलग मेथड बताया, बिकॉज उसका हर एक का फॉर्मूला अलग अलग है ना. पॉलीगॉन, ट्रायंगल, सर्कल, एवरी क्लास हैज द डिफरेंट एरिया, है ना? यस और नो? बट कॉमन क्या है? एरिया. बट व्हाट इज द कॉमन हियर? एरिया. चलो अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं. क्वेश्चन चेंज करते हैं मतलब क्या करेंगे, जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया, चलो यहाँ पे स्वाति. स्वाति को पूछा, स्वाति विच इज योर फेवरेट डिश? यस स्वाति, काय तुझं फेवरेट कुठला आयटम आहे जो तुला बनवता येतो किंवा भातल बनवता येतो? टेल मी स्वाति. पुरणपोळी. अरे वा. ओके, ठीक आहे. हा. स्फूर्ती, व्हॉट इज युअर फेवरेट डिश? टेल मी. म्हणजे जे तुला बनवता येतं ते. फास्ट. हा, पास्ता. अच्छा. कोमोलिका, बघा एकदम इंडियन आणि एकदम ट्रेडिशनल. ठीक आहे, वेस्टर्न. चला नेक्स्ट. व्हेज बिर्याणी. ओके. So now I got an answer here, puran poi, pasta and veg biryani. Okay, I got the answer, puran poi, pasta and veg biryani. So स्वाती, जर मला तुला प्रोसिजर विचारायची असेल पुरणपोळीची तर मी काय यूज करायचं वर्ड? टेल मी. जर मला तुला पुरणपोळीची प्रोसिजर विचारायची कशी बनवायची तर मी वर्ड काय यूज करू? टेल मी. रेसिपी. स्फूर्ती, यू टेल मी word. If I want the recipe, I want the procedure for pasta. Kamolika, you also tell me. Recipe. Okay. Recipe. Now, right now, two people said recipe, only one person said pasta recipe. So tell me which is better, Spurti, pasta recipe or only recipe? For biryani, veg recipe or only recipe? Yes, which is the better word? Tell me. Only recipe or particular recipe name? So guys, understand one thing here. In entire world, you can go anywhere. In entire world, you can go anywhere. You can ask, you can just ask for any food preparation. So that person will use the word recipe only. That person will use the word recipe only. मीन्स अगर तुम लोगों को किसी को भी कोई भी फूड के बारे में पूछना है तो तुम लोग क्या यूज करोगे? यू विल यूज द वर्ड रेसिपी. ओके, पुरणपोळी, पाव भाजी, डोसा, इडली, वेज बिर्याणी, नॉन वेज बिर्याणी, एनीथिंग. Common word is what? Recipe. Am I right? Yes or no? What is the common word here? Recipe. तो अगर देखो हमारे पास अगर पूरी दुनिया में अगर हमने फाइंड आउट किया तो कम से कम यू विल गेट 1 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स एटलीस्ट. ओके चलो. तो कैन यू एबल टू रिमेम्बर 1 लाख नेम लाइक पुरणपोळी प्रोसीजर, पास्ता डेवलपमेंट, ओके, देन बिरयानी preparation. Can you able to remember this name? No. No. The answer is no. Therefore, here it is recommended that don't use the separate name, circle area, triangle area, rectangle area. Instead of this, you define one parent here. Now tell me, for pav bhaji, for biryani, for the dosa, for puran poi, okay, can you tell me the parent name here? Who is the parent class for all these classes?
Tell me the parent class. Okay. Parent class is what? Food. That's right. So the रेसिपी मेथड का ओनरशिप किसके पास है? फूड के पास है या पाव भाजी बिरयानी के पास है? हु इज द ओनर ऑफ दिस मेथड, रेसिपी मेथड? ओके, तो सिमिलरली हम लोगों को क्या करना है? फाइंड एरिया. ओके, फाइंड एरिया करके एक मेथड लिखा मैंने शेप क्लास के अंदर, और सर्कल को बोला मैंने यहां पे एक्सटेंड्स शेप. सर्कल ने एक्सटेंड किया किसको? शेप को, और इस मेथड को ओवरराइड किया. आई एम आस्किंग वन वर्ड हियर. ओके, देखो कि लाइक सर्कल इज अ शेप और सर्कल हैज अ शेप. विच इज द करेक्ट वर्ड? सर्कल इज अ शेप और सर्कल हैज अ शेप. ओके, तो देखो यहां पे क्या होने वाला है कि सर्कल के पास एक मेथड है. व्हाट इज द मेथड नेम? फाइंड एरिया. इमेजिन दिस इज अ फूड क्लास. फूड क्लास के पास मेथड है रेसिपी. दिस इज अ पाव भाजी क्लास. पाव भाजी इज अ फूड. पाव भाजी इज अ फूड, बट पाव भाजी हैज a रेसिपी. पाव भाजी हैज अ रेसिपी. तो ये जो सर्कल एरिया जो है ये मैं यूज करूंगा कहां से? आई विल टेक दिस मेथड इंस्टेड ऑफ सर्कल एरिया. फाइंड एरिया will use here method called as find the area. Remember this method is a find area. Same thing, go to triangle, method is find area. Method is find area. ठीक है, तो देखो पाव भाजी हैज रेसिपी, बिरयानी हैज रेसिपी. ओके, पाव भाजी हैज रेसिपी, बिरयानी हैज रेसिपी. So this method is coming from the parent class. This method is coming from the parent class. तो अगर मेथड कोई पेरेंट क्लास में लिखा गया है, उस मेथड को अगर तुम लोग चाइल्ड क्लास में लिखोगे विथ सेम सिग्नेचर. सेम सिग्नेचर मतलब क्या? उसका रिटर्न टाइप, उसका नेम, उसकी आर्ग्यूमेंट, अगर सब कुछ सेम है, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग. दिस इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग. ओवरराइडिंग, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द ओवरराइडिंग. Overriding मतलब क्या? If a parent has a method, if you use the same method in the child class with same signature, it's called as a overriding. Everybody understood this line? Okay. Overriding मतलब क्या? Overriding मतलब parent के पास अगर कोई method है, उस method को अगर child के अंदर यूज किया with same signature, इस concept को हम लोग बोलेंगे overriding. Remember this. This concept is called as the overriding. Overriding का एडवांटेज क्या है कि overriding का एडवांटेज क्या है कि overriding is used to take the only behavior from the parent, but implementation is provided by the child. बिहेवियर म्हणजे मेथड घ्यायची पॅरेंटची, पण इम्प्लिमेंटेशन कोण प्रोव्हाइड करेल? चाइल्ड. म्हणजे फूडची रेसिपी मेथड घेतली, पण पावभाजीची रेसिपी. फूडची रेसिपी मेथड घेतली, पण बिर्याणीची रेसिपी. फूडची रेसिपी मेथड घेतली, पण पास्ताची रेसिपी. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दिस concept is called as the overriding. This concept is called as the overriding. Okay, now ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फूड क्लास को जो रेसिपी है उस रेसिपी को बॉडी होगा क्या? बताओ दो. मैंने अगर बोला फूड का रेसिपी बताओ, कैन यू एबल टू एक्सप्लेन मी द रेसिपी ऑफ द फूड क्लास?
इसका मतलब what is use of this brackets? इसका मतलब there is no use of the bracket. Am I right? इसका मतलब there is no use of the bracket. Yes or no? ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का कोई यूज नहीं है. ओके, तो if you delete this and add the semicolon here, then you have to use the word abstract. You have to use the word abstract. इसका मतलब abstract method is abstract method is empty method. It means abstract method is empty method. Everybody understood? Am I audible properly? स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना नीट आता? स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Okay. So abstract method is the empty method. Abstract method is the empty method. Okay. So this is the empty method. ठीक है? So abstract method is the empty method. Abstract method does not have any body. This concept is clear. Abstract method is an empty method. Abstract method does not have any body. Understood? Means recipe is an empty method. Recipe method there is no meaning. Okay. अगर रेसिपी को मीनिंग नहीं है तो फूड को मीनिंग है क्या? अगर तुम लोग होटल में गए, तुमने बोला अगर वेटर को गिव मी अ फूड, तो वेटर क्या बोलेगा? विच फूड? तुमने बोला नो आई वांट अ फूड ओनली, चलेगा कैसे बताओ? इफ यू से आई वांट फूड, okay, so because food is a not real word, it's a general word. Food is not a real word, it is a general word. तो इस टाइप के वर्ड को हम लोग बोलते हैं abstract. Abstract class. एक सेकेंड ना. Okay, so listen everybody, here is a class abstract. So abstract class, which is a general class, you cannot create an object of the food class. Similarly, you cannot create the object of the abstract class. So abstract class contains abstract as well as non-abstract methods. Abstract class contains abstract as well as non-abstract methods. Suppose there is a method called as thank you. Okay, abstract class के अंदर abstract as well as you can have non-abstract methods. Okay, remember this. So public abstract class shape, यहाँ पे हम लिखेंगे SYSO thank you. ठीक है? तो abstract method होता है empty method. अगर क्लास के अंदर सिंगल वन और मोर देन वन मेथड इज abstract method, class must be abstract. Class must be abstract. Okay, class is a abstract. Okay, if class is abstract, then we can't create object of abstract class, and if any child class is inheriting abstract class, then child class has to override abstract method compulsory. Abstract method compulsory. Okay, so as I said here, if a class is abstract, then you cannot create the object of abstract class. If a class is abstract, then we can't create object of abstract class,
and if any child class is inheriting an abstract class, then child class has to override the abstract method. Compulsory means now if your circle is inheriting the shape, and if shape, so in suppose if you use the method here, circle area, you will get error. Error. Look at this. Circle must implement in the inherited abstract method shape.findArea. It is compulsory to override this method. Which method? FindArea. So this is called as the abstract class. So now you can able to understand why the abstract method is provided. Whenever you are developing any software and something is like common behavior, but implementation will change depends on the object. Take an example. If you say I am creating an object of the saving account, current account and demat account, but every account has the withdrawal and deposit method, but there are different charges for every method. Okay, so but I know that there is a withdrawal and deposit method, so here I will use the withdrawal and deposit method and change the implementation. Similarly, in the recipe method will change the behavior as per the object, but recipe method is a common for all the other classes of the food type. Okay, you can take an example of the instrument: piano, guitar, flute, okay, sitar, all are the instruments, but they have a play method, but play method will behave differently instrument to instrument. Understood? Play method will behave, there is a different voice for every play method. Yes or no? Method is common but voice is different. Method is common but voice is different. So all this type of methods are called as abstract methods, and these methods are coming from the base class, and that class is called as the abstract class, because you cannot play the instrument. You can play guitar, piano, flute, but you cannot play the instrument. जर तुम्ही गेले एखाद्या इंस्ट्रुमेंटच्या शॉप मध्ये, तुम्ही म्हटले की नाही, आय वॉन्ट टू परचेज द इंस्ट्रुमेंट, so obviously that shopkeeper will ask you which instrument, and if you said no, I want instrument only, then no meaning. Okay, instrument is a general word. You cannot buy the instrument, you cannot order the food, you cannot play the sports. You're getting my point? You can buy the guitar, you can order the pav bhaji, you can play the cricket, football, badminton, basketball, right? But every sports has a common method rule, and rule will change the behavior method to method, class to class. But rule method is provided by the sports class. Rule method is provided by which class? Sports class. Understood? This type of scenario is always, remember, it is the abstract class and the abstract method. मी 2-3 example दिले तुम्हाला. Sports is the abstract class, football, cricket, badminton, basketball are the normal classes, and they will override the rule method. Similarly, instrument is a base class, which is abstract class. Play is a method which is overridden by guitar, piano, flute, sitar. Okay, and shape class is abstract class. Circle, triangle, rectangle will override the method. Now you tell me the some example like this: abstract class and 3 normal classes and method of the abstract class. चला सांगा तुमचे इमॅजिनेशन, बोला. ज्याचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करत नाही असा क्लास. ठीक है, चलो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. तुम लोगों ने ट्राई किया है काफी अच्छे से, नो इश्यूज. ओके, बट रिमेंबर द फ्यू क्लासेस लाइक फूड एंड रेसिपी, देन इंस्ट्रूमेंट एंड प्ले, then shape and area, then as I said animal and voice will change the behavior. Sports and rules, okay, sport rules will change as per the game. ठीक है, तो इस टाइप से याद रखो, बिहेवियर अलग होता है और एट्रीब्यूट अलग होता है. क्लियर? ठीक है, तो कंसेप्ट तो क्लियर हुआ सबको. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, क्यों यूज करना है, इसका मतलब रीजन इज दैट, लिसन, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द मेन यूज ऑफ दिस. कि आज अगर मैंने, देखो, आज अगर मैंने एक क्लास बना दिया शेप नाम का, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कल तुम कोई भी शेप ऐड करो ना, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे तुम लोग में कंफ्यूजन हो रहा था, कोई बोल रहा था पास्ता रेसिपी, कोई बोल रहा था रेसिपी, तो पाव भाजी रेसिपी, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा. आई नो दैट देयर इज वन स्टैंडर्ड इज मेंटेन इन माय प्रोजेक्ट कि फाइंड एरिया जो है वो हर क्लास यूज करने वाला है. फाइंड एरिया जो मेथड है, आई एम गोइंग टू यूज दिस मेथड इन ईच एंड एवरी चाइल्ड क्लास. कल कोई भी शेप क्लास आने दो, उसके लिए मैं इसको यूज करने वाला हूं. अंडरस्टूड? आई एम क्रिएटिंग माई एप्लीकेशन फॉर टुमारो. I am creating my application for tomorrow. You can add any class, polygon, hexagon, square, triangle, सबके लिए मेरे पास मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. I will just simply inherit this class
and override the method. Which method? Find area. तो abstract class जो होता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता. ओके, तो होटल में तुम लोग फूड ऑर्डर नहीं कर सकते, बट अगर तुमने 3-4 फूड ऑर्डर कर दिए, तुम वेटर को पूछते हो कि हमारा ऑर्डर कब आएगा, हमारा फूड कब आएगा, है ना? तो फूड का कलेक्शन हो सकता है, बट फूड इज, यू कैन नॉट ऑर्डर द फूड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड. So here I will create circle C is equal to new circle 2.2. Okay, angle C is equal to new triangle 2.2 comma 3.3. As far as so circle area is G dot find area and P dot find area. बट अभी मुझे बताओ कि ये प्रॉपर होगा, जो फाइंड एरिया जो मेथड है वो सर्कल का है या शेप का है? टेल मी. फाइंड एरिया मेथड ये सर्कल का है या शेप का है? टेल मी. नो, नो, द मेथड इज फ्रॉम द शेप. ठीक है, रेसिपी मेथड पाव भाजी का है क्या फूड का है? बताओ. Recipe method is belongs to the pav bhaji or food. Tell me. Food. Therefore, you should take the object of the base class. You cannot create object of the shape class. ऐसे allowed नहीं है, याद रखो. एरर आएगा. ये देखो एरर आ गया. नहीं तो इसका मतलब तुमने होटल में आके फूड ऑर्डर कर दिया. You cannot order the food. See, this is not valid. तो यहाँ पे ये लिखो, चलेगा null. बट अभी ऑब्जेक्ट तुम करोगे तो S इज इक्वल टू फूड पाव भाजी, ये अवेलेबल है. दिस इज वैलिड. फूड पाव भाजी. सिमिलरली ये होगा फूड बिरयानी, ये उसका रेसिपी. तो मेथड ऑफ द शेप क्लास will change the behavior for circle. After some time, if binding is there with the triangle class, you will get area of the triangle. Similarly, for rectangle also, S is equal to new rectangle and you will get S dot find area. इसका मतलब ये एक ही जो मेथड है, ये मेथड बिहेवियर अलग अलग कर रहा है. यहाँ पे ये सर्कल का एरिया दे रहा है, यहाँ पे ये ट्रायंगल का एरिया दे रहा है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. एकच मेथड आहे पण एरिया वेगळ्या वेगळ्या क्लासचा येतोय. येस ऑर नो? टेल मी. ओके, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म. इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. दिस इज कॉल्ड एज polymorphism. Understood? This is called as a polymorphism. Many forms also called as runtime polymorphism. इससे अच्छा तुम बोलोगे इसको runtime polymorphism. Runtime poly मतलब क्या? many. Morphism मतलब क्या? morphism मतलब क्या? forms. This is called as runtime polymorphism. हम लोग C++ में भी यही कंसेप्ट देखने वाले हैं. वहां पे सिर्फ होता है वर्चुअल फंक्शन. एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जगह वहां पे होता है वर्चुअल फंक्शन. यही कंसेप्ट है, सेम टू सेम. तो पहले C++ में था, फिर जावा में आया. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म. समझ में आया? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जैसे मैंने अगर स्फूर्ति को पूछा टेल मी द रेसिपी, तो मुझे वो पास्ता का रेसिपी बताएगी. इफ आई आस्क कमोलिका, सो शी विल एक्सप्लेन मी द रेसिपी ऑफ द बिरयानी. अगर मैंने स्वाति को पूछा तो वो पूरन पोली का रेसिपी बताएगी. क्लियर? सो ये चेंजेस क्यों होता है? डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट. क्योंकि कमोलिका हैज बिरयानी ऑब्जेक्ट, राइट? ओके, स्वाति हैज पूरन पोली ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द वे your method will change the behavior. You are getting my point, everybody? क्योंकि इन तीनों ने मुझे 3 फूड बोले थे. अगर मैं एक पर्सन को पूछा तो वो वही रेसिपी बताएगा. दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ये रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन सा बिहेवियर आएगा. इसी कंसेप्ट को हम लोग डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज बाइंड टू दिस रेफरेंस. डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट जो इसको बाइंड किया गया है, इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म.
सगळ्यांना कळलं का कन्सेप्ट? रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम काय असतं ते, आणि ते इम्प्लिमेंट करायला यू हॅव टू यूज ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास. Okay, you can add the extra method public void test, no issues, you can add the method. ठीक है, test circle. Okay, तो हाँ हम लोग कहाँ पे थे? You cannot create a object of the abstract class, but you can create an array of the abstract class. तो यहाँ पे हम लोग array create कर सकते हैं. Shape is equal to new shape. मैंने कितने ऑब्जेक्ट के लिए किया? 5 ऑब्जेक्ट के लिए किया. तो ये तुम्हारा असाइनमेंट नंबर 3 था जो तुम लोगों ने मुझे लास्ट वीक में बोला था. आई होप यू आर लाइक एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, राइट? तो लास्ट वीक में तुम लोगों ने पूछा था ना, तो ये था तुम्हारा असाइनमेंट नंबर. ओके ओके, सो ये हो गया 1 के लिए. हाँ, देखो ये हम लोग ऐसे बना सकते हैं. तो 0 1 ओके 2 3 4, ठीक है. तो ये हो गया यहाँ पे 2.1 3.2 पॉइंट, ठीक है. 3 4.1 5.2 ऐसे. अभी इसको प्रिंट करने के लिए पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आई विल शो यू. एक स्टैटिक मेथड मींस वी कैन कॉल डायरेक्टली. स्टैटिक टॉपिक को भी ठीक से पढ़ के रखो. टुडे ओनली वन ऑफ द लाइक स्टूडेंट टोल्ड मी सर एग्जाम में इंटरव्यू में मुझे पूछा था ये टॉपिक ऐसे. तो ये मैंने अभी सीखा है तुम लोग ऑलरेडी, बट रिमेंबर व्हाई वी आर यूजिंग स्टैटिक मेथड. ओके, तो यहाँ पे फॉर ईच लूप मैंने सिखाया था. आई होप यू रिमेंबर दिस. ओके, शेप एस कोलन ARR. यहाँ पे आके इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करना सीखो. इंस्टेंस ऑफ अगर होगा सर्कल का तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे. ओके, रिटर्न नहीं कर रहे हैं ना, एस डॉट फाइंड एरिया ऐसे. जस्ट वांट टू टेल यू पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर. अगर एस के अंदर ऑब्जेक्ट है सर्कल का तो ये मेथड कॉल करो. ओके, इफ एस इंस्टेंस ऑफ ट्रायंगल है तो हम लोग करेंगे एस डॉट फाइंड एरिया, एस डॉट फाइंड एरिया. ठीक है. तो अगर एस के अंदर ऑब्जेक्ट है सर्कल का तो फाइंड एरिया, एस के अंदर ऑब्जेक्ट है ट्रायंगल का तो ट्रायंगल का फाइंड एरिया. फर्स्ट टाइम चेक करो ऑब्जेक्ट कौन सा है. सपोज ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे सर्कल का तो ये कॉल करेगा सर्कल का फाइंड एरिया. सेकेंड टाइम अगर ऑब्जेक्ट आएगा ट्रायंगल का तो ये कॉल करेगा ट्रायंगल का फाइंड एरिया. नेक्स्ट टाइम फिर से ऑब्जेक्ट चेक किया, फिर से सर्कल का है तो सर्कल का फाइंड एरिया. नेक्स्ट 2 ऑब्जेक्ट ट्रायंगल के तो ट्रायंगल का फाइंड एरिया. So in this way you will get the polymorphic behavior of your this class base class. तो एरिया के अंदर, एरे के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा पहले क्लास का, अगर चेक करो सर्कल का हो तो उसका मेथड कॉल करो, ट्रायंगल का हो तो उसको कॉल करो. ओके, हा, मग त्याला मिनिंग नाही राहत. सर्कल सी इक्वल न्यू सर्कल लिहिलं ना तर याच्याने काय होतं की तो जी मेथड असते ती पॅरेंटची नाही घेत, तो स्वतःची मेथड बनवतो. ओके, तर ती स्वतःची मेथड बनवतो तो. क्लिअर? सो देअरफॉर यू शुड टेक. आपण म्हणताना फूडची रेसिपी म्हणतो, पावभाजीची रेसिपी हे कसं ऍक्च्युअली रेसिपी इज फ्रॉम द फूड बट इट इज कनेक्टेड फॉर द पावभाजी. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. देयर इज अ डिफरन्स. पावभाजीची रेसिपी आणि फूड क्लासची रेसिपी. क्लिअर एव्हरीबडी? रूल मेथड क्रिकेटचा नाहीये, रूल मेथड स्पोर्ट्सचा आहे. तो क्रिकेटने फक्त काय बॉरो केलाय. क्लिअर? for temporary. Understood? Then rule method will change the behavior with the table tennis, with the badminton, with the basketball. Clear? Ownership कोणाकडे? Okay, food कडे. But temporary you will get the ownership. Child will behave like as a parent. Child will behave like as a parent here. Temporary, the child will behave like as a parent here, and parent method we are using. But actual method is for the implemented for the circle class. Same for the triangle also. सगळ्यांना कळली का कन्सेप्ट ऍबस्ट्रॅक्ट क्लासची? तर आज मी याच्यावर तुम्हाला असाइनमेंट देणार आहे. कमीत कमी 5 क्वेश्चन्स आहेत, ते आजच्याच व्हायला पाहिजे. किती क्वेश्चन्स आहेत? 5 क्वेश्चन्स ओनली. ओके,
So today you have to solve the 5 questions. ओके, तर तुम्हाला मी ग्रुपवर पाठवतोय असाइनमेंट. तर ते 5च्या 5 क्वेश्चन आजच्या आज झालेच पाहिजेत. ओके.